साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 8 नवंबर 2016 को हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक पहला धक्का पड़ा नोटबंदी की घोषणा से। जुलाई 1, 2017 को, यानी कि ठीक 5 साल पहले, जल्दबाजी में गलत तरीके से जीएसटी लागू किया गया और ये दूसरा धक्का हुआ। आज इस अवसर पर हमारे साथ सांसद पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी हैं। उनका एक वक्तव्य है जो आपको दिया गया है अंग्रेजी में और हिंदी में भी, और मैं गुजारिश करूंगा कि चिदम्बरम जी आपको संबोधित करें। इस 5 साल में जीएसटी से हमें क्या देखने को मिला है, इसका नतीजा क्या हुआ है और किस तरीके से हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर इतनी परेशानी आई है, वो इसको और विस्तार से बोलिए। शर्मा जी। I have an opening statement which I will read in English. I believe the Hindi translation has also been distributed. And then both Jairam Ramesh and I will take questions. Today, GST celebrates its 5th birthday. There is nothing really to celebrate. GST had serious birth defects. In the last 5 years, these defects have only become worse, and all those touched by GST have been seriously injured. None more than the common people who consume goods and services and pay exorbitant taxes without knowing why the government has imposed the crushing tax burden upon them. At the outset, the Congress party wishes to make it absolutely clear that the so-called GST that is enforced today was not, I repeat, was not the GST envisaged by the UPA government. I had made it clear on the floor of Parliament and elsewhere that the GST of our conception was a single low rate across all goods and services with few exemptions. There could be a small plus or a small minus to the single rate in a few cases during the transition period. We may remind you that the current GST law was passed against the express advice of the then Chief Economic Advisor, whose recommendations were contained in an official publication titled Towards a Revenue Neutral Rate. The GST that we have today is The GST that we have today is a complex web of many rates, conditions, exceptions, and exemptions that will leave even an informed taxpayer completely bewildered. Not all registered dealers are informed taxpayers. As a result, they are at the mercy of the tax collector. Currently, there are 6 rates: 0.25, 3, 5, 12, 18, and 28%. Besides, there are zero-rated and exempted goods. Every tweak of the tax rates is another twist of the knife in the deep wounds of small businesses. After 5 years of GST, there is no rationalization in the number of returns to be filed. Compliance with e-way bill and e-invoicing is no simpler. Various provisions of the GST laws have still not been implemented, and instead, the government has resorted to stopgap or temporary arrangements, some of which have lasted 5 years.
Claiming refunds is a nightmare, and thousands of cases are being litigated in the courts. Adding to these woes is a recurrence of technical glitches that have not been sorted out even after 5 years. The law is so defective, and the government has been forced to issue hundreds of executive directions. In 5 years, the government has issued 869 notifications, 143 circulars, and 38 orders. That is a change every second day. This is a GST that is flawed, defective, and unstable. A flawed GST has led to large-scale destruction of the MSMEs, a sector that contributes up to 90% of the jobs in the manufacturing sector. Many small units have simply gone out of business. Small businesses that are not either registered or not required to be registered under GST have been cut out of the supply chain. Demonetization, along with the flawed GST, have put an end to thousands of small businesses, and with their exit, lakhs of jobs have also perished. The only beneficiaries of the flawed GST are big businesses, chartered accountants, and tax lawyers. The costs have far outweighed any gains. The worst consequence has been the complete breakdown of trust between the center and the states. VAT earlier and GST later were introduced on the basis of mutual trust and to promote cooperative federalism. But the manner in which the GST laws were passed, and worse, the manner in which they are being administered, have deepened the distrust between the center and the states. There is no real consensus in the meetings of the GST Council. The skewed formula on voting rights of the center and the states has been used by the center to push through decisions that are bitterly opposed by the states, including privately by BJP-ruled states. The holding back of the arrears of compensation cess and the excessive resort to cesses rather than shareable taxes has increased the chasm between the two sides. Despite the promise in 2017, no state has achieved an annual revenue growth of 14%. The states have filled the gap through the compensation cess, but in 2 years, owing to a shortfall in the compensation cess, the gap was filled through a back-to-back loan. The states were forced to accept the arrangement against their will, further deepening the distrust and adding to the states' debt burden. The delaying of fiscal transfers to the states during the COVID-19 pandemic, when they needed it the most, came as a shock. The states collectively have felt betrayed by the center, and several finance ministers have expressed their regret and anguish publicly. Some of them have gone to the extent of demanding a rethink on GST. In the final analysis, the GST laws and the manner of their implementation have wrecked the economy. As far as the Congress party is concerned, we reject the current GST. And as promised in the election manifesto of 2019, we will work toward the replacement of current GST by GST 2.0 that will be a single low rate. Further, we will administer the law in a manner that the GST revenues will be shared fairly and equitably between the center and the states, and in a manner that will promote the growth of business, especially small businesses, and bring back the lost jobs. साथियों, चिदम्बरम जी का बयान हिंदी में भी आपको दिया गया है। मोटे तौर से 5 साल के बाद हम यह कह सकते हैं कि जीएसटी से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर है,
वो तो बिल्कुल उसका सर्वनाश हो गया है। एमएसएमई, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, मध्यम उद्योग हमारे निर्यात के करीब 50% निर्यात एमएसएमई से आता है। और जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, औद्योगिक सेक्टर में करीब 90% रोजगार एमएसएमई सेक्टर से ही पैदा होता है। तो जिस तरीके से इस लघु उद्योग पर जीएसटी का असर देखने को मिला है, बेरोजगारी बढ़ी है और हर एक राज्य में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हर एक राज्य में, भारत के हर एक राज्य में एमएसएमई बंद पड़े हुए हैं। और दो कारण हैं, एक कारण तो जीएसटी है और दूसरा कारण चीन से जो निर्यात बढ़ा है। दोनों एक साथ एमएसएमई का बिल्कुल सत्यानाश करा दिया है सभी इलाकों, सभी राज्यों में। तो ये पहला नकारात्मक असर जीएसटी का पिछले 5 साल में देखने को मिला है। दूसरी बात जो चिदम्बरम जी ने कहा कि जो यूपीए के कार्यकाल में कल्पना की गई थी जीएसटी की, जब चिदम्बरम जी ने अपना बजट पेश किया था 2004 में, पहला बजट जुलाई 2004 में, जब उन्होंने पहली घोषणा की थी कि जीएसटी लाएंगे, और तब उसका विरोध गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। वो जीएसटी और आज के जीएसटी में जमीन आसमान का फर्क है। चिदम्बरम जी ने कहा था कि जब हम जीएसटी लागू करेंगे तो एक ही दर होगा और वो कम से कम होगा, पर आज 6 दर हैं और पिछले 5 साल में हर 2 दिन कोई ना कोई नया ऑर्डर, कोई संशोधन या कोई नया सर्कुलर निकाला जा रहा है। तो जीएसटी में कोई स्थिरता नहीं है और स्थिरता के बिना ये जीएसटी सफल नहीं हो सकता। तीसरा मुद्दा जो इन्होंने आपके सामने रखा है कि जीएसटी की परिभाषा, जीएसटी का मूल सिद्धांत है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विश्वास। केंद्र सरकार ने कुछ अपने अधिकार छोड़े, राज्य सरकारों ने कुछ अपने अधिकार छोड़े और जीएसटी बना, पार्लियामेंट में कानून पारित हुए। पर पिछले 5 साल में जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल ने काम किया है, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री कार्यालय का एक अंग बन गया है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो जीएसटी काउंसिल में होता है। आम सहमति की बात जो होती है, जो बार बार वित्त मंत्री कहती हैं एक आम सहमति बन रही है, ये आम सहमति नहीं है। जीएसटी काउंसिल के बाहर बुलडोजर राज और जीएसटी काउंसिल के अंदर भी बुलडोजर राज। ये तो बुलडोजर ही बुलडोजर है। कोई आम सहमति नहीं, राज्यों की कुछ सुनवाई नहीं होती, राज्यों से जो मांगे आते हैं उसका नजरअंदाज किया जाता है। और 4 दिन पहले ये सभी राज्यों ने ये सोचा था कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन जो है, जो मुआवजा मिलता है उनको, वो 4 साल में बढ़ाए जाएंगे। वो नहीं हुआ। जीएसटी कॉम्पेंसेशन बढ़ा नहीं है और सभी राज्यों के वित्तीय स्थिति अभी नाजुक है, खतरे में है। और जो राज्य सरकारों से खर्च होता है, खास तौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, इस पर इसका बड़ा नकारात्मक असर आपको देखने को मिलेगा। जीएसटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी होने की जरूरत है ताकि जो महामारी जैसे आपदाएं आते हैं उससे निपटने के लिए राज्यों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो जीएसटी में नहीं है और सारे के सारे मामले हम अभी केंद्र सरकार पर निर्भर हैं।
तो ये जो विश्वास था, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई थी जब जीएसटी लागू हुआ, वो जीएसटी के कार्यान्वयन में कभी देखने को नहीं मिला है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं देख रहे हैं। तो ये बयान काफ़ी विस्तार में दिया गया है और अंत में चिदम्बरम जी ने ये भी कहा है कि जीएसटी, जब कांग्रेस की जीएसटी जब यूपीए सरकार में थी और पहले चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थे, बाद में प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, और आप जानते हैं 2011 में लोकसभा मार्च में बिल पेश किया गया था जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, और वो बिल स्टैंडिंग कमेटी में 2.5 साल तक लंबित था, 2.5 साल तक। और सबसे महत्वपूर्ण कारण 2.5 साल के लिए क्यों स्थायी कमेटी में लंबित था, क्योंकि वहां गुजरात के मुख्यमंत्री उसके खिलाफ थे। गुजरात के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने और एकदम यू टर्न लिया, जीएसटी एक जादू की छड़ी बन गई और जुलाई 1, 2017 को जीएसटी लागू हुआ। तो ये एक तुगलकी फरमान था। नोटबंदी पहला तुगलकी फरमान था, जीएसटी दूसरा फरमान था। पर ये बात बार बार हमें आपके सामने रखनी चाहिए कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में कमी नहीं थी, जीएसटी का जो मूल डिजाइन था वो गलत था, और उसी के वजह से एमएसएमई आज बंद पड़े हुए हैं, आवश्यक वस्तुओं के दामें बढ़ रही हैं, राज्यों में केंद्र सरकार का विश्वास बहुत भारी मात्रा में घटा हुआ है, और बीजेपी के राज्य भी चिंतित हैं कि अगले 4-5 साल में क्या होगा। तो ये रहा 5 साल का हमारा अनुभव। ये जन्मदिन है, पर अत्यंत निराशाजनक जन्मदिन है, और हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों को बुलाकर पार्लियामेंट में इस पर एक बहस हो, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, क्योंकि हर एक राज्य इसमें शामिल है। जो इसमें और टिंकरिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ एक संशोधन, वहाँ एक संशोधन नहीं, इसमें मूल परिवर्तन की जरूरत है। और ये मूल परिवर्तन तभी हो पाएगा जब प्रधानमंत्री सभी पार्टियों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि उनका आदत नहीं है, पर फिर भी हमें सपने देखने का भी अधिकार है। तो हम चाहते हैं कि इस पर बहस हो, इस पर पुनर्विचार हो, पार्लियामेंट में इस पर फिर से एक बहस हो, ताकि देश को एक सही जीएसटी, जो कहा गया था जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी का अर्थ होगा गुड एंड सिंपल टैक्स। 5 साल के बाद हम कह सकते हैं ये टैक्स ना गुड है ना सिंपल है। तो अभी चिदम्बरम जी आपके सवाल का जवाब देंगे। Yes. This will depend upon the intent of the government. As Jairam just said, the government must call an all-party meeting, listen to the all parties, especially the non-BJP parties' finance ministers, and amend the GST laws and substantially modify the manner in which the GST law is being administered. Now, we are ready to give the suggestions at such a meeting, but whether such a meeting will be called, I have my grave doubts. So they believe that what they did was right, what they are doing is right, and what they will do is right.
they can never do any wrong. But on the ground, you will find small businesses are the most affected. And this is not only our view. Only today, Dr. Arvind Subramaniam has penned an article on the 5th year of GST, and he's pointed out all the drawbacks of the GST that is being implemented today. And one of the most damaging comments he makes is, not everyone anticipated how centralizing the government would become more broadly, which vitiated the trust between the center and the states, unquote. Now, that is only one damaging comment. There are several such comments in his short article today. And he is the author, or so-called author, of the GST idea after the NDA government came into office. Of course, GST Council is dysfunctional. If you speak to the state finance ministers, not only the non-BJP state finance ministers, even the BJP state finance ministers are extremely unhappy. You see, the voting principle in the GST law is skewed in favor of the center. Nothing can be passed without the center's affirmative vote. That's the voting pattern. If you add the BJP finance ministers and the states and the center's vote, they constitute an overwhelming majority. And the non-BJP finance ministers have to necessarily acquiesce, because otherwise they will not distribute the areas of compensation. They will not listen to their even administrative suggestions. So the entire setup of the GST, especially the voting pattern, is completely skewed. It will only favor the center's views, and it will deepen the distrust between the center and the states. If you go back to the debate in Parliament when the law was passed, and Dr. Arvind Subramaniam refers to that debate, I pointed out that this voting pattern is hopelessly bad. Earlier, the Empowered Committee was a more democratic body. It was chaired by a non-ruling party finance minister, Dr. Ashim Das Gupta. And when I took over as finance minister, I made Mr. Sushil Modi chair the Empowered Committee. Here, the finance minister chairs the committee. And I'll just tell you one anecdote. Not this meeting, a couple of meetings earlier. Soon after the meeting was over, I was talking to a couple of finance ministers. The finance minister heard the state finance ministers, including the critical ones, and she abruptly rose and left. She did not even make the usual concluding remarks. Thank you very much for all of you for attending the meeting. I will consider your suggestions. She just abruptly rose and left the meeting. This GST Council is dysfunctional. It will remain dysfunctional because of the skewed voting rights and the manner in which the finance minister conducts the meeting. मैं एक चीज़ कहना, इसको मैं हिंदी में दोहराना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जीएसटी काउंसिल आने के पहले, जो जीएसटी की शुरुआत के पहले जो काम किया जा रहा था, वो एम्पावर्ड कमेटी द्वारा किया जाता था। और ये एम्पावर्ड कमेटी वित्त मंत्रालय की, वित्त मंत्रियों की एक एम्पावर्ड समिति थी, और पहले इसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर असीम दासगुप्ता ने की। और जब चिदम्बरम जी दूसरी बार वित्त मंत्री बने 2004 में,
सुशील मोदी जी उसकी अध्यक्षता की, यानी कि बीजेपी सरकार, मिलीजुली सरकार थी हालांकि, पर बीजेपी के नेता थे, वो इस समिति के अध्यक्ष थे। तो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ एम्पावर्ड कमेटी ने अपना काम किया। पर जब जीएसटी काउंसिल बना जुलाई 2016 में, जीएसटी काउंसिल बना, तो जीएसटी काउंसिल तो एक कठपुतली बन गई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में ही निर्णय लिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि सरकार की ओर से आप बार बार सुनेंगे जीएसटी ठीक था, पर बीच में कोविड महामारी आ गई तो हमें और नुकसान हुआ। पर ये बात ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में इसका जिक्र नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि जीएसटी में सुनम्यता होनी चाहिए, जीएसटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि अगर एक राज्य में बाढ़ आए, आप जानते होंगे जीएसटी के पहले ज़माने में अगर एक राज्य में बाढ़ आएगा तो वहाँ एक टैक्स लगाया जाता है, तो रेवेन्यू मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। वो अभी नहीं, अभी केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, अभी जीएसटी काउंसिल में आना पड़ता है। तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कई राज्यों ने, केरला के वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, तमिलनाडु के वित्त मंत्री, सभी वित्त मंत्रियों ने कहा थोड़ा हमें फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, ताकि हम बार बार केंद्र सरकार से ऐसे नहीं हो कि हम बार बार आपसे ही विनती करने आए। ऐसी आपदा आ जाती हैं, कुछ आपदा महामारी आपदा है, कुछ आपदाएं बाढ़ की वजह से आ जाती हैं या ड्राउट की वजह से आ जाती हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये इस डिज़ाइन में नहीं था। और मोटे तौर से जीएसटी काउंसिल में जो बातचीत होती है वो बिल्कुल साफ, आप किसी भी वित्त मंत्री से अगर आप बात करें, वो कहेंगे कि केंद्र सरकार मन बनाकर आती है और एक दिखावा होता है कि बातचीत चल रहा है, बातचीत हो रही है, पर निर्णय तो और कहीं लिए गए हैं और निर्णय दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा जीएसटी काउंसिल एक कठपुतली है। Not to worry too much, it will come to 40 rupees dollar as promised by Mr. Narendra Modi and the late Ms. Sushma Swaraj. Go ahead. See, we don't know what the truth is. According to the center, it is ordered the clearance of all dues up to May 31, 2022. And only the June share has to be paid. According to the states, they think that there are huge dues. For example, if you remember 2017-18 and 18-19, 2017-18 and 2018-19, there was a short sharing. And unless either the Controller of General Accounts or even better, the Comptroller and Auditor General publishes a definitive report on how much was collected during each year, how much was shared, and was it undershared or overshared. We don't know. Sitting in the opposition, we have no way of knowing. The states say that there are arrears. The center says we have cleared it. I think
it requires Sherlock Holmes to find out what the truth is. Well, we will demand answers in Parliament, and I know what the answer will be. They will say, no, we have cleared all the dues. But unless a third party, either the Controller General of Accounts, or even better, the Controller and Auditor General, audits this and says what was collected and what was shared, and how will we know? Even on shareable taxes, the correct picture emerges after 2-3 years. I'm talking about the regular taxes, income tax, corporate tax, which are shared with the states at 41%. The correct number is available only after 2-3 years. एक महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया था 2 दिन पहले या कल, कॉम्पेंसेशन सेस को 4 साल से बढ़ाया गया, माने और 4 साल कॉम्पेंसेशन सेस इकट्ठा करेगी केंद्र सरकार। पर क्या ये राज्यों के साथ शेयर करेंगे कि नहीं, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। अब तक 5 साल में ये सेस लगाया जाता था और राज्यों को गारंटी दी गई थी कि हम आपको मुआवजा देंगे। हालांकि उसमें देरी हुई है और उसमें जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, राज्य सरकारों की ओर से एक मांग है, केंद्र सरकार एक आंकड़े देती हैं, और मेरे जानकारी के अनुसार अगर आप सारे राज्यों को मिलाकर देखें तो करीब 77,000 करोड़ रुपया और देना बाकी है उनको। ये एक आंकड़ा है राज्यों की ओर से। पर जैसा कि इन्होंने कहा, जब तक सीएजी इस पर विश्लेषण नहीं करेगी तो ये चलता रहेगा, पार्लियामेंट में हम उठाते रहेंगे। पर सबसे बड़ी बात और सबसे मैं समझता हूं निराशाजनक बात जो अभी है, आपने पूछा इमीडिएटली क्या करेंगे। इमीडिएटली क्या करना है, राज्यों को गारंटी और 4 साल के लिए देना होगा। पर आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया, हम 4 साल के लिए सेस इकट्ठा करते रहेंगे, पर क्या राज्यों को हम उसको वो देंगे, उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया। तो हम हमारे ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से तो हम चाहते हैं, और सभी वित्त मंत्री राज्य के, इसमें हमारे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है, बीजेपी राज्य, कांग्रेस, सीपीएम, कोई भी राज्य, बीजेडी, जो नहीं चाहेगा कि ये कॉम्पेंसेशन मुआवजा और 4 साल नहीं बढ़ाया जाए। हम ये मांग जरूर करते हैं कि तुरंत इस पर एक निर्णय लेने की जरूरत है। आप सेस तो इकट्ठा करेंगे, पर राज्यों के साथ ये नाइंसाफी होगी कि आप वो मुआवजा नहीं बढ़ाएंगे, ये मैं समझता हूं ये मापदंड सही नहीं है। I tweeted a few weeks ago that when the sharing of the compensation cess, or in fact at that time the levy and sharing of compensation cess was an issue, I said it has to be extended beyond June 30 for at least 4 or 5 years. Now, as Jairam pointed out, a few days ago, the government announced that the levy of the cess will continue, but the sharing of the cess, no decision has been taken. And I believe on Wednesday, the decision was no decision, and it will be decided in a future date. Now, why is this cess being collected? If it is not to be shared with the state governments, why is this compensation cess being collected? Is the center collecting the compensation cess to compensate itself? The compensation cess, by definition, is to compensate the states for the shortfall. If you don't take that decision, why are you levying a compensation cess to compensate yourself? It's an absurd situation. Yes, Sanjeev. You see, the right persons to answer this question are the current finance ministers of the states who are
grappling with this problem on a day-to-day basis. The first thing that has to be done is to get rid of this 6 rates. You have to have a single low rate. That is GST. Now, world over, that is GST. And Dr. Arvind Subramaniam, again in his article today, says, I recommended a single low rate, but what they have done is completely distorted my recommendation. It has to be a single low rate. That's the starting point. If you make an error at the starting point, your entire path, your travel on the path will be wrong. So let's scrap this GST. Let's go back to the drawing board, start with a single low rate, and then let's work out the further steps. And there are serious problems about two authorities taxing. I don't know how many of you know this. Half the taxpayers come under the center's jurisdiction, and half the taxpayers come under the state's jurisdiction. It's a vertical division. Whereas logically, it should be, if you have to divide the administrative powers, it has to be a horizontal division. The small taxpayer, the small businessman, should not have to go after the central tax collector. There are any number of absurdities in this law, and I think this law very difficult to correct the law. You have to replace the law. Yes. You are very optimistic. What are the chances of a private member bill on every alternative Friday even being admitted or discussed or voted? By the time, I think, 10 years will be over. Take it up. We'll take it up, but this session will not be long enough. जो आपने सवाल उठाया था कि 6 रेट अभी चिदम्बरम जी ने कहा, दूसरी बात मैं इस पर जोड़ना चाहता हूँ कि एमएसएमई पर तो जीएसटी लागू होता है, उसकी पूरी समीक्षा होने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से जीएसटी लागू हो रहा है लघु उद्योगों पर, सूक्ष्म उद्योगों पर, मध्यम उद्योगों पर, और कंप्लायंस जो है, जो कंप्लायंस, देखिए बात सिर्फ दर तक सीमित नहीं है, कंप्लायंस भी है। और जैसा कि चिदम्बरम जी ने कहा, हमारे तीन समुदाय हैं जो इससे फायदा पहुंचा है। एक बड़े बड़े कंपनी, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और तीसरे वकील। हालांकि चिदम्बरम जी जीएसटी वकील नहीं है, पर वकीलों को भी बहुत फायदा हुआ है, सीए को भी फायदा हुआ है, बड़े बड़ी कंपनी उद्योगों को फायदा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को। तो एमएसएमई के लिए क्या जीएसटी रेजिम होनी चाहिए, क्या जीएसटी प्रणाली होनी चाहिए, इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। They are united in their opposition, except that they cannot express their opposition. They are united but mute. No, only on GST, please. No question on any other subject other than GST. Anything else? Yes. No, it shows their abundant love and affection towards the average consumer. There's an article today, I think, by the finance minister on 5 years of GST in one of the papers. I read it. The entire article is based from the point of view of the government. Not a word, not a sentence
from the point of view of the consumer. Please understand, GST is a consumption-based tax. Whichever state consumes the the goods or services has a right to levy. It's a consumption-based tax. The ultimate taxpayer is a consumer. It has nothing to do with his income, profit, loss, nothing to do with that. It's simply consumption. If I buy a good or buy a service, I have to pay tax. Whether I may be rich, I may be poor, I may have a profit, I may be a loss, you have to pay. It's a consumption-based tax. So the lens through which you have to evaluate the GST law is the consumer's lens. You have a consumer's lens, but unfortunately, the finance minister does not seem to have a consumer lens at all.